Well, the first word is exploration. 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 Yes, its definition is it is a noun. The activity of searching or finding out about something. The activity of searching और फाइंडिंग अबाउट समथिंग कि कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं किसी चीज़ को ढूंढने के लिए या फिर किसी चीज़ को सर्च करने के लिए या किसी चीज़ के बारे में सर्च करने के लिए दिस दैट एक्टिविटी इज़ नोन एज एक्सप्लोरेशन. सो दैट मीन्स हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं to replace the word search or examine. Let us see two examples. We need to carry out a full exploration of all the alternatives. So इस एग्जाम्पल के अंदर जो एक्सप्लोरेशन है उसको यूज़ किया गया एज एन एग्जामिनेशन. वी नीड टू कैरी आउट, हमें ज़रूरत है एग्जामिन करने की सभी अल्टरनेटिव को. वी नीड टू कैरी आउट अ फुल एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इस एग्जाम्पल के अंदर जो एक्सप्लोरेशन है उसको एज अ सर्च यूज़ किया गया है. द एक्सप्लोरेशन for new resources of energy is vital for the future of our planet. So सर्च करना न्यू रिसोर्सेज को, सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बहुत ही ज़रूरी है फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट, अपने प्लानट के फ्यूचर के लिए. द एक्सप्लोरेशन, द सर्च फॉर न्यू रिसोर्सेज, द एक्सप्लोरेशन फॉर न्यू रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इज़ वाइटल फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट. वाइटल का मीनिंग भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो दिस इज द वर्ड एक्सप्लोरेशन. सो द नेक्स्ट वर्ड इज प्लेटो. लेट अस सी इट्स प्रोनाउंसिएशन. Plateau. 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 Well, plateau, it can be a noun or it can be a verb. First, see plateau as a noun. So, plateau, a large flat area of land that is high above the sea level. तो पहले तो हम किसी एरिया को, जो फ्लैट एरिया है उसको हम प्लेटो बोल सकते हैं, स्पेशली जो काफ़ी हाइट पे हो, मींस किसी माउंटेन के ऊपर हो. लेट मी सी अ पिक्चर ऑफ अ प्लेटो. सो दिस इज़ कॉल्ड प्लेटो. जैसे ये माउंटेन है और जो ये इसका जो ऊपर वाला जो हिल है, जो टॉप है माउंटेन का, वो फ्लैट है. दिस फ्लैट एरिया इज़ नोन एज प्लेटो. So, a large flat area of land that is high above sea level. और प्लेटो की क्या डेफिनेशन है? प्लेटो इज आल्सो एज अ नाउन इज कंसिडर्ड एज नो चेंज. जब किसी किसी कोई ग्राफ है, मान लो उसमें कोई चेंज नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड, that we can regard as a plateau, a period during which there are no large change occurs. ये plateau word आप अपने टास्क 1 के अंदर भी यूज़ कर सकते हो. A period during which there is no large changes. The US deaths are reached a plateau in the 1960s. The US death rates reached a plateau in the 1960s before declining suddenly. I hope कि ये जैसी ये लाइन लिखी हुई है ऐसे आप टास्क 1 में इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो, प्लेटो को. नाउ प्लेटो कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब. सो जब इसको वर्ब फॉर्म में यूज़ करेंगे, टू रीच अ पर्टिकुलर लेवल एंड देन स्टे द सेम. टू रीच अ पर्टिकुलर लेवल एंड देन स्टे द सेम. किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर पहुंच जाना और फिर वहीं पर कायम रहना, दैट इज कॉल्ड प्लेटो. आई I had been losing about a pound a week on my diet, but recently I have plateaued and haven't lose an ounce. सो ये बंदा बात कर रहा है कि मैं डाइट पे हूँ. आई हैड बीन लूजिंग अबाउट अ पाउंड अ वीक. मैं
1 पाउंड लूज कर रहा था एक वीक के अंदर, बट रिसेंटली आई हैव प्लेटोड, मैं प्लेटोड हो गया, मैं एक ऐसी लेवल के ऊपर पहुंच गया कि हैवंट लॉस्ट एन ऑन्स, अब मैं बिल्कुल भी वेट लूज नहीं कर रहा. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज caused over sales to plateau. द इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज़ कॉज्ड, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसने कॉज किया है सेल्स को टू प्लेटो, एक जगह पे स्थिर हो जाने के लिए. सो दैट इज हाउ वी यूज दिस वर्ड एज अ verb and as a noun. Well, next word is descend. Let us listen its pronunciation. Descend. 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 Well, it is a verb and its meaning is to go or come down. To go or come down. Uh, Example is the path go down steeply into the valley. The path descended steeply into the valley. So यहाँ पर हम go down लगा सकते हैं या come down लगा सकते हैं. We can use a word descend. Jane descended the stairs. Jane went down the stairs. Jane went down the stairs. Jane descended the stairs. So this is how we can use this word descend. Descend means to go or come down. Next word is set off. It is a phrasal verb. So its meaning is to start on a trip. To start on a trip. What time do we set off tomorrow? What time do we set off tomorrow? So next word is proceed. Let us listen its pronunciation. Precede. Precede. Proceed. So it is a verb. Its definition is to be or go before something or someone in time or space. कोई चीज़ पहले आ रही है किसी और चीज़ से, वो टाइम के अंदर हो या फिर स्पेस के अंदर हो, we call that situation is proceed. So let us see an example. It would be helpful, ये बहुत ही helpful होगा, if you were to proceed the report with an introduction. अगर आप रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन को पहले रखते हो, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल. इट वुड बी हेल्पफुल इफ यू वर टू प्रोसीड द रिपोर्ट विद एन इंट्रोडक्शन. सो दिस इज हाउ वी यूज दिस वर्ड. सिनोनिमन इसका वर्ड है, सिमिलर वर्ड्स है प्रीफेस एंड अपोजिट वर्ड है फॉलो और सक्सीड. सक्सीड. So next word is descent. So it is a noun. So let us see its definition. An occasion when a group of people arrive somewhere, usually suddenly or unexpectedly. So कोई ओकेज़न जब बहुत सारे लोग कहीं जगह पर पहुंच जाएं सडनली, उस ओकेज़न को हम बोल देते हैं descent. Let us see an example. We weren't prepared for the descent of thousands of journalists on the town. हम प्रिपेयर नहीं थे जो इतने सारे लोग, इतने सारे जर्नलिस्ट आए टाउन के अंदर. We weren't prepared for the descent of thousands of, for the arrival of thousands of, for the descent of thousands of journals on the town. So another meaning of descent is a movement down. A movement down. The plane began to make its final descent into the airport. The plane began to make its final descent, final movement down into the airport. So it is an interesting word, descent. Trick. 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 Trick is a verb. Its definition is to walk a long distance, usually over land such as hills, mountains or forests.
सो एक लंबे वॉक को हम बोल देते हैं ट्रैक. We spent the day trekking through the forest and or over mountains. We spent the day trekking through forests and over mountains. So we spent the day walking through. हम simply walking लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या लिखा, trekking through the forest over the mountains. Well, the next word is Companion. companion. Well, it is a noun, and let us see its definition. A person. Companion can be a person. A person you spend a lot of time with, often because you are friends or because you are traveling together. तो जो बंदा है, किसी किसी पर्सन को हम कंपेनियन बोल सकते हैं जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और या फिर आप जिसके साथ ट्रैवल करते हो. द डॉग हैज़ बीन हर कांस्टेंट कंपेनियन दीज पास्ट 10 years. The dog has been her constant companion these past 10 years. So this is the meaning of this word companion. Well, the next word is Ruin. ruin. So it is a noun. So this word has a few different meanings. It can be used in very different situations. The first definition is the process or a state of being spoiled or destroyed. The process or state of being spoiled or destroyed. कि कोई चीज़ टूटी हुई है, उस स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, ruined बोल सकते हैं. The car accident meant the ruin of all her hopes. The next example is they left the palace fall into ruin. Similar word is distraction, devastation. Another definition of this word is a situation in which a person or company has lost all their money or their reputation. किस सिचुएशन में कोई पर्सन हो या कंपनी हो, उसने सारी मनी अपनी लूज कर ली हो और रेपुटेशन लूज कर ली हो, दैट इज नोन एज ruin. Alcohol was my ruin. Alcohol was my ruin. जो इस रीडिंग के अंदर ये वर्ड यूज हुआ वो इस डेफिनेशन के हिसाब से हुआ. द ब्रोकन पार्ट्स दैट आर लेफ्ट ऑफ एन एंशियंट बिल्डिंग और टाउन. द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ that are left of an ancient building or town. The ruins of ancient city of Carthage. The next word is Ascent. 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 So it is a noun. Its meaning is climb. So the act of climbing or moving upwards. The act of climbing or moving upwards is known as ascent. Let us see some examples. She made her first successful ascent of Everest last year. And as the plane made its ascent, we saw thick smoke coming from one engine. So ascent जैसे इसका सिमिलर वर्ड है climb. तो हमने एक पहले वर्ड किया था descent. So it is the opposite of ascent. Descent is the opposite of ascent. A slope, another meaning of this word is a slope, path or road that goes up something. We struggled up the slippery ascent. We struggled up the slippery ascent. So next word is Vivid. 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 Vivid, it is an adjective. So let us see what is the definition of this word. Vivid description. वैसे विवर का मीनिंग होता है हम क्लियरली, यहाँ पर हम क्लियरली लगा सकते हैं, वहाँ पर विविड लग सकता है. विविड डिस्क्रिप्शंस, memories, produce very clear, powerful and detailed image in the
images in the mind. So vivid को हम जैसे हम स्पीकिंग के अंदर बोलते हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है, आई कैन से आई विविडली रिमेंबर, तो इस तरह से इस वर्ड को यूज़ किया जा सकता है. He gave a very vivid and often shocking description of his time in prison. He gave a very vivid or clear and often shocking description of his time in prison. So this is how we can use this word. It is also considered as very brightly colored. She was wearing a vivid pink shirt. She was wearing a vivid pink shirt. Well, next word is monumental, monumental. It is an adjective, so its meaning is very big. A monumental task, a very big task, a monumental waste of time, a monumental waste of time. Next word is Spellbound. 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 So it is an adjective, and its definition is having your attention completely held by something so that you cannot think about anything else. Spellbound, हम की जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अमेजिंग है, वहाँ पर इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. फैसिनेटिंग इसका सिमिलर वर्ड है, फैसिनेटिंग. सो द चिल्ड्रन लिसन्ड टू द स्टोरी spellbound. First example is he held his audience spellbound. He held his audience spellbound. I was spellbound by the beauty of that picture. I was spellbound. I was fascinated by the beauty of that picture. So fascinate, I was amazed. उस तरह से इस वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं. So the next word is perplexed, perplexed. perplexed, Perplexed. perplexed, Perplexed. It is an adjective. इसको हम confused का similar word मान सकते हैं. Confused because something is difficult to understand or solve. तो यहाँ पर हम confused, I'm perplexed. Similar way से इसको use किया जा सकता है. Its example is the students looked perplexed, so the teacher tried to explain once again. The students looked perplexed, so the teacher tried to explain once again. Police were perplexed by the killing. जो पुलिस थी वो confused थी by the killing because there didn't seem to be any motive. There didn't seem to be any motive. Well, the next word is abandon, abandon. abandon, Abandon. It is a verb. Its meaning is to leave a place, thing or person, usually forever. कि किसी बंदे को या किसी स्पेस को या किसी को छोड़ देना, that is called abandon. We had to abandon the car. We had to abandon the car. By the time the rebel troops arrived, the village had already been abandoned. खाली करवा चुके थे. As a baby, he was abandoned by his mother. As a baby, he was abandoned by his mother.